Hello, my dear children. Welcome back to Let's Learn English. This is Shivani, your English teacher. Students, in the previous video of letter writing, we discussed few important points, that how to write formal letter, what is the use of formal letter, and what are the basic patterns and rules that should we keep in our mind while writing formal letter. And today we will discuss how to write informal letter and what is informal letter. So before starting today's class, let's have a quick recap of whatever we have done in the previous video. A letter is written message that can be handwritten or printed on paper. It is usually sent to the recipient via mail or post in an envelope. Although this is not a requirement as such, any such message that is transferred via post is a letter, a written conversation between two parties. So, in modern times, nowadays, importance of letter writing has decreased a lot. Earlier, letter writing was an important way, okay, but still, people use letter writing in their day-to-day life. It's basically used for formal ways. ठीक है, हम अपने ऑफिस में, अपने स्कूल्स में अभी भी लेटर राइटिंग को यूज़ करते हैं. So let's discuss what is informal letter and why do we actually write informal letter. Informal letter. Informal letters are written to a close acquaintance of wait. Yes, I'm sorry. Informal letters are written to close acquaintances of the writer, their friends, family, relatives, etc. So जैसे हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं जनरली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, बैंक, स्कूल, प्रिंसिपल एट्सेट्रा, हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं अपने क्लोज एक्विटेंसेस के लिए, मतलब अपने जान पहचान वालों के लिए, अपने जानने वालों के लिए. दे कैन बी योर फ्रेंड्स, योर फैमिली और योर रिलेटिव्स. Since they are written to close relation, the letters have an informal and personal tone. Okay, because we write informal letters to our personal relations, ठीक है, हम अपने personal relations में लिखते हैं, तो उसका जो tone होता है लिखने का वो काफ़ी informal होता है और काफ़ी personal tone होता है. Okay, these are written in an easy, simple and conversational style. जो हमारा एक इनफॉर्मल लेटर को लिखने का वे होता है वो बहुत ही ईजी होता है, सिंपल होता है और एक कॉन्वर्सेशन के मीडियम में होता है. जैसे हाय, हेलो, कैसे हो, कहाँ हो, ठीक है, पे माई ग्रीटिंग्स, पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ये सब एक बहुत ही पर्सनल टोन हो जाती है. ठीक, द लैंग्वेज एंड टोन इज़ इनफॉर्मल. दीज ऑल्सो फॉलो अ पर्टिकुलर लेआउट. ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है, ये पर्सनल में लिखा जाता है तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो. इट्स नॉट लाइक दैट. इनफॉर्मल लेटर्स के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ पैटर्न एंड लेआउट होते हैं. Casual language is used while writing informal letters and sometimes the letters may even have an emotional undertone. Suppose आप किसी को इस वजह से लेटर लिखते हो कि उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई है या आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई और आप अपनी किसी फ्रेंड से शेयर करना चाहते हो, तो वो जो टोन होता है लिखने का वो इमोशनल भी हो सकता है. ठीक है, मीन्स यू कैन एक्सप्रेस वेल इनफ इन योर इनफॉर्मल लेटर, जो कि आप फॉर्मल लेटर में नहीं कर सकते. आप उसमें अपने आप को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर सकते. Informal letters are mainly used for personal communication, so they do not have to follow any specific pattern, format or conventions. They can be written as per the writer's wishes and the requirements of the situation. So the letter is written in a personal fashion in casual, unassuming language. Okay, so there is no hard and fast rule, but still there is a format. ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते, आप वो वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते.
इट्स टोटली अप टू द राइटर्स चॉइस कि वो क्या लिखना चाहता है, वो अपने फ्रेंड से कैसे बात करना चाहता है, वो अपने पेरेंट्स से कैसे बात करना चाहता है. ठीक है, लाइक सम पीपल pay their regards to their parents by saying namaste, pranam, and on the other hand some people just go on like hi mom, hi papa. Okay, so it's up to you, but there is a specific layout, there's a specific format to write informal letter. So let's see the format of informal letter. Address. So the very first thing that we write in our informal letter is the address. So the first thing to write is your address, that is the right address of the writer. Suppose I am writing a letter to you, so I will write at the top of the letter my address, okay, and that too on the right hand side. We usually write the address on the right hand side of the page at the very top. बेटा इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो पहले का फॉर्मेट था, मैंने ये फॉर्मल लेटर में भी बताया था कि पहले जो फॉर्मेट चलता था उसमें हम लेटर में और हर चीज़ में एड्रेस लिखते थे लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है, बट नाउ द फॉर्मेट हैज़ चेंज्ड. अब हम सारी की सारी चीज़ें किस तरफ लिखते हैं? राइट हैंड साइड पे. हम कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं लिखेंगे. On the top of very top, the address should be accurate and complete even when writing to a close friend or relative. The address must be written so they can reply back to letter with ease. If the recipient of the letter is in another country, do not forget to write your country as well in the address. Okay, so very first thing we write is the address, and जो आपका address होता है that should be very accurate and very complete. It should be very precise, क्योंकि अगर हम चाहते हैं, सपोज हमने आपको लेटर लिखा, मैंने आपको लेटर लिखा, एंड इफ़ यू वांट टू रिप्लाई मी बैक, ओके, एट द सेम एड्रेस, सो विद दैट पर्पस, keeping that purpose in mind, the address should be very accurate. And if you are writing a letter to some, in other country, then the country should be properly mentioned. Country जो है वो properly mention होनी चाहिए. Next thing is date. Next, just below the address, we write the date. This allows the reader to have a reference as to when the address was written. He can then relate better to the contents of the letter. Now, next thing is just, it's just same as the formal letter. Next thing we write is the date. एंड आपकी जो डेट है वो भी बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए. सपोज़ आप किसी को लेटर लिख रहे हो कि मेरा बर्थडे है और मैं तुम्हें अपने बर्थडे में इनवाइट करना चाहता हूँ और आई वांट यू टू कम इन माय बर्थडे अलोंग विद योर फैमिली. सो आप अगर आज की डेट लिख रहे हो, ठीक है, सपोज़ आप डेट लिख रहे हो 10 सितंबर, सो डोंट फॉरगेट कि आपकी जो लेटर राइटिंग की डेट है और जो आपकी इवेंट की डेट है उसमें कुछ फ़र्क होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बर्थडे आज है 10 सितंबर को और 11 सितंबर को, मतलब आपका बर्थडे 10 सितंबर को है और आपने लेटर लिखा है 9 सितंबर को, क्योंकि कोई भी लेटर एक दिन में नहीं पहुंचता. तो इस बात को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमारा जो हम लेटर लिख रहे हैं वो 10 सितंबर है, तो एटलीस्ट देयर शुड बी 7 और 8 डेज डिफरेंस बिटवीन द इवेंट, अगर आप इन्विटेशन के लिए बुला रहे हो तो. Next is greeting. Now, since you know the person you are writing to, the greeting can be informal as well. If it is a friend or someone close to your age, you can greet them by their first name, like Dear Alex. If you are writing to your relative like your mother, father, aunt, uncle, you may greet them as such. For example, Dear Mom. Okay? So, you are writing लेटर टू योर पर्सनल रिलेशंस. सो आपको यहाँ पे रिस्पेक्टेड या समथिंग ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो विद हाई एलेक्स और हाई जॉन, ठीक है. और अगर आप चाहते हो, सो यू कैन ऑल्सो ऐड डियर इन दैट. जस्ट नाउ आई हैव सेड दैट सबका अलग अलग तरीका होता है ग्रीट करने का अपने पेरेंट्स को. कुछ लोग होते हैं जो हाय हेलो लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नमस्ते एंड प्रणाम लिखते हैं. सो इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू ग्रीट द पर्सन. And if you are writing to an elder person, someone you respect greatly, you can address them with Mr. or Mrs. Like, say for example, you were writing a congratulatory letter to your teacher. It can be addressed as Mr. Dear Mrs. Alex.
ओके अगर आप अपने किसी टीचर को लिख रहे हो या किसी ऐसे को लिख रहे हो जिसकी आप इमेंसली रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, वहाँ पर आप मिस्टर या मिसेस ऐड कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू, एज आई सेइंग इट अगेन एंड अगेन. इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. एंड नाउ वी बिगिन राइटिंग द एक्चुअल लेटर. यहाँ से हमारा एक्चुअल लेटर स्टार्ट होगा. द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सेट्स द टोन फॉर द होल लेटर. You might begin by asking the recipient about their well-being, or you may say that you hope the letter finds them in the good health and great spirits. So this is the most basic way of writing an informal letter. ठीक है, आप simply अपना जो letter है वो start कर सकते हो just to ask about their health. That hello, how are you? I hope you are fine. I hope your family is in a good state. और आप directly यहाँ से भी start कर सकते हो कि hello, I hope that this letter finds you in good health and good spirit. So this is the very basic and very nice way to start your informal letter. ये आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हो, either it's your family, either it's your friend, teacher, anybody. The opening of informal letters should be casual and comforting. It must not be formal and direct as in business letters. ठीक है, so जो आपकी starting होगी informal letter की, that should be very casual and comforting. सामने वाले को वो बड़ी comforting लगनी चाहिए. उसको शुरू के 2 लाइन ही पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई business letter लिखने के लिए या कोई काम बताने के लिए उसको letter लिख रहे हो. ठीक है, थोड़ा सा आपका एक अपनापन उसमें दिखना चाहिए. दैट आई एम ग्लैड टू नो, okay, that you are fine. I'm glad to know that your father is recovering from such disease. Now body of the letter comes. The letter overall should maintain a friendly tone. ठीक है, but you have to adjust the language and the wordings according to who you are writing to. So as I'm saying it again and again, that informal letter is totally up to the writer's choice. It's up, it depends on you, how you want to choose your words, how you want to talk to your parents and how you want to talk to your friends, relatives, teacher. It's up to you कि आप कैसे बात करते हो, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो अपने बात करने के तरीके में, अपने टीचर में और अपने पेरेंट्स में, अपने फ्रेंड्स में और अपने रिलेटिव्स में. With a friend, you can afford to be a very casual and flippant even. But if you are writing to an elder relative, you must be extremely respectful and considerate. Okay, so if you are writing a letter to your friend, you can be a little bit, naughty, and you can talk to him in a extremely friendly manner. But if you are writing to any elder person, don't forget to be extremely respectful. Okay, even if you are writing informal letter. Next is conclusion. If in the concluding paragraph, sum up the reason for writing the letter, that is, summarize the letter. Say a meaningful and affectionate goodbye to the reader, and do not forget to invite the reader to write back or reply to you your letter. Now this is the main portion of your informal letter, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आपने अपना लेटर लिखा, लास्ट वाला जो पैराग्राफ होगा उसमें आप अपने लेटर को समराइज़ करोगे. आप लिखोगे कि सो एंड सो आई रोट दिस लेटर, मीन्स आई वांटेड टू इनवाइट यू, और आई वांटेड यू to know that I have been promoted to such post, okay, and so that I have written this letter to you. उसके बाद उसको आप एक affectionate गुड बाय करो, एक अच्छे से गुड बाय करो, रिस्पेक्टेड भी होना चाहिए और affectionate भी होना चाहिए. ठीक है, then don't forget to tell them to reply you back. उनको ये भी बोलो कि just I will be waiting for your reply, या don't forget to reply me back, या I'll be desperately waiting for your reply, revert. It shows an intention to keep the conversation going. इससे पता चलता है कि आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो आप उसके साथ कॉन्वर्सेशन करने के इरादे में हो, इंटेंशन में हो. ठीक है, आपने लेटर लिख दिया, ओके चलो बाय, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम फाइन, ओके, आई शुड स्टॉप राइटिंग हियर, बाय, टेक केयर. फिर सामने वाला बस पढ़ेगा और वहीं बात ख़त्म हो जाएगी. ओके, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ही शुड रिप्लाई यू बैक. सो एक कॉन्वर्सेशन बनी रहेगी. आप उसको लेटर लिखोगे, सामने वाला आपको लिखेगा, फिर आप उसको लिखोगे. सो इट्स द वे ऑफ कॉन्वर्सेशन. ओके, नेक्स्ट इज सिग्नेचर. There is no way to sign off informal letter. Since they do not follow a strict format, you may sign as
sign off as you please. Some commonly used phrases are, अब यहाँ पे कोई आपको yours faithfully, your obediently, ठीक है, या लिखना नहीं है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपको yours faithfully लिखना है. यहाँ पे तो आप अपने फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को, किसी को भी लिख सकते हो. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या लिखना चाहते हो. इफ़ इट्स योर फ्रेंड लिख सकते हो लॉट्स ऑफ लव, नीचे अपना नाम, बेस्ट विशेज़ अपना नाम. अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हो, सपोज आप अपने टीचर को लिख रहे हो, तो आप लिख सकते हो विद रिगार्ड्स, काइंडली, एंड देन अंडर दैट योर नेम. Yes, so this was the main format, this was the main way to write informal letter. Now I have this one example for you to understand more clearly how to write informal letter. So here is the letter. It's a birthday party invitation letter. Okay, somebody has to invite some other person for their birthday. It can be your relative, it can be your friend, it can be your parents as well. So the very first thing that I have written here, means the person is written here, is the address of himself. जो यहाँ पर लेटर लिख रहा है उसने अपना ही एड्रेस लिखा है. 33 5th Avenue 4th Cross Road, Mumbai 89, Maharashtra, AG Maharashtra. Okay, next thing we will write is date. Okay, और डेट में डिफरेंस होना चाहिए. देखिए यहाँ पे लिखने वाले की डेट है 18 तारीख, और नीचे आप अभी देखोगे कि इनका जो बर्थडे है, जो पार्टी है जिसके लिए ये इनवाइट कर रही हैं, वो बर्थडे है 30 को. ठीक है, मीन्स यहाँ पे 12 डेज़ का लगभग डिफरेंस है, और 12 डेज़ में ईजिली हमारा जो लेटर है वो पहुँच जाएगा जिसे हमें लेटर भेजना है उसके पास. सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जिस डेट पे आप लिख रहे हो और जिस डेट पे आप किसी को बुला रहे हो, दोनों के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए ताकि वो लेटर इजीली सामने वाले तक पहुंच जाए. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है डियर प्रीति. सिंस आई हैव टोल्ड यू, यू नो द पर्सन वेरी वेल. आप अपने किसी जानने पहचानने वाले को लिख रहे हो तो आपको मिस्टर या मिसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डियर से काम चल जाएगा. ना फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करना है, ग्रीटिंग्स लिखनी है. सामने वाले के बारे में पूछना है कि वो कैसा है, उसकी हेल्थ सही है कि नहीं, उसकी फैमिली कैसी है. So the letter has started by how are you, how are your family members, how is the weather there. You can change the words, you can change the sentences according to you. आपको weather नहीं पूछना, आपको कुछ और पूछना है, आप कुछ और पूछ सकते हो. आपको उसकी फैमिली की हेल्थ पूछनी है, आपको उसकी पढ़ाई लिखाई पूछनी है, आप वो भी पूछ सकते हो. इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू आस्क फॉर द वेदर. ठीक है, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो फाइन हियर. अब यहाँ पर आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से कि आप सामने वाले के लिए कैसे फील कर रहे हो. ठीक है, चलो. I am writing this letter to invite you for my birthday party which will be celebrated on 30th June 2020. The party will be conducted in my Lonavala's farmhouse. It will begin at 6 p.m. in the evening. The complete address of the venue is that you will write here. If you have any confusion regarding the address, you can directly call me on my phone number. So in the second paragraph itself, I have summarized the whole reason of राइटिंग दिस लेटर. मैंने सब कुछ बता दिया है कि मैंने लेटर क्यों लिखा है. मैं तुम्हें अपने बर्थडे में इनवाइट करना चाहती हूँ जो कि 30 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा. मैंने वेन्यू भी बता दिया है कि इट विल बी कंडक्टेड इन लोनावलास फार्म हाउस, और जो पार्टी है वो 6 बजे से शाम को शुरू होगी, और जो वेन्यू का कंप्लीट एड्रेस है वो ये है. ठीक है, फिर मैंने ये भी लिख दिया है कि अगर कोई कन्फ्यूजन होगी रिगार्डिंग एड्रेस, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी और यू कैन डायरेक्टली call me on my phone number. It's been a long time since we have seen each other and I will be really happy if you can attend my birthday party. Waiting to meet you soon. Take care. With love, Pooja. Okay, so अब देखने वाली बात ये है कि इसका जो बर्थडे था, that birthday is on 30th June and the date of writing the letter is 18th June. So there should be at least 10 to 12 days difference between the date when you write the letter and the date of event. Okay, so that the letter can reach the person on time. So this was it, and I will also send you 2 letter for you to write to practice it, because it's very important for you to practice it. Okay, I can tell you many things, but ultimately it's you who have to practice it, isn't it? So yes, this was it about letter writing.
And if you have still any sort of questions, feel free to ask me in the comment section. And we will meet up again in the next video with another topic. Till then, take care and stay safe.